अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल 4-1 देखते हैं जिसमें मुख्तलिफ कंडीशन आपको दिखाई गई हैं और हमने मोमेंट्स कैलकुलेट करनी है हर फिगर के लिए. सो फॉर ईच केस वी नीड टू डिटरमिन द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट O. सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर A जो कि आपको लेफ्ट में टॉप पे दिखाई गई है. So starting with this force which is having a magnitude of 100 Newton, and we need to calculate the moment of this force about point O. So what is the perpendicular distance here? Sir, 2 meter. 2 meter. So the magnitude of moment is going to be 100 times 2. So 100 into 2, which is 200 Newton meter, is going to be the magnitude. What about the tendency of rotation? Clockwise or counterclockwise? Sir, clockwise. Clockwise. So we are going to include it with a negative sign as well. So overall this force is going to create a moment of minus 200 Newton meter about point O. Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay, moving to the second figure, which is figure B. Now a force of 50 Newton is being applied and we need to calculate the moment of this force about point O. What is the perpendicular distance in this case between the line of action of this force and the moment axis? Is it 0 or 0.7? 0.05. 0.75. So the magnitude of this moment is going to be 50 times perpendicular distance, which is 0.75. What about the direction? What is this tendency? Clockwise or counterclockwise? Clockwise. It is again clockwise. So we are going to include it with a negative sign. So the overall moment caused by this force is going to be minus 50 into 0.75 Newton meter. Clear है या कोई doubt है किसी को? Okay. So moving on to the third figure, which is figure C. आपके पास एक force है 40 pounds की, which is acting in this direction. So for this force, what is the perpendicular distance now? Sir, 40 sin 30 होगा. No, I am asking about the perpendicular distance between the line of action of this force and point O. Basically वो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 cos 30 गिवन है. So 4 plus 2 cos 30 is going to be the perpendicular distance, isn't it? Yes. Yes, sir. So the moment would have a magnitude of 40 times 4 plus 2 cos of 30. जहां तक ताल्लुक इसके डायरेक्शन का है, so what is this tendency of rotation? Is it clockwise or counterclockwise? Clockwise. Clockwise. So we are going to add a negative sign here as well. So overall the moment would be minus 40 into 4 plus 2 cos 30. Negative sign हमने क्यों शामिल किया? Because the tendency of rotation is in a clockwise direction. और जो convention हम इस्तेमाल करते हैं वो counterclockwise moments are taken as positive, whereas clockwise moments are taken as negative. Clear है? Yes. Okay, so moving on to the fourth figure, in which a force of 60 pounds is being applied at the end of this rod. What is the perpendicular distance now? It is basically this distance, isn't it? So ये कितना है? Sir, 1 sin 45. So it is basically 1 sin 45. So the moment is going to be 60 times 1 sin 45. ये उसका magnitude आ गया है. जहां तक ताल्लुक इसके direction का है. So what is this tendency of rotation? Clockwise or counterclockwise? Counterclockwise. So आप इसको positive moment के तौर पे जो है वो represent करते हैं. Coming to the final figure, in which a force of 7 kilonewton is being applied at the end of this rod. So what is the perpendicular distance now? Sir, 3. तो कैसे आपने जज किया? Sir, 4 minus 1. जी, ओवरऑल इसकी लेंथ जो है वो आपके पास 4 है. ओवरऑल लेंथ आपके पास 4 है और जो ऊपर छोटा पोर्शन है वो आपके पास 1 दिया हुआ है. सो आपने जो है वो 4 में से 3 माइनस कर दिया तो आपको जो है वो 4 में से 1 माइनस कर दिया तो आपको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला वो आपको ये मिल रहा है विच इज 3 मीटर. सो ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया. सो ओवरऑल द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मोमेंट इज गोइंग टू बी 7 into 3. डायरेक्शन क्या होगा इस मोमेंट का? क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज. तो आपने इसको पॉजिटिव साइन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया. आई होप कि इन पांचों फिगर्स में मोमेंट किस तरह कैलकुलेट की गई है, साइंस किस तरह डाले गए हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है. किसी को कोई डाउट हो किसी फिगर के हवाले से
तो काइंडली अभी सर ये पूछ जो लें। 4 वाली सर फिगर है सर इसमें सर ओ मोमेंट नहीं होंगे सर, वो सर जो पिवट सर ओ नहीं होगा सर फोर्थ फिगर में? जो 60 पाउंड वाली फोर्स है, यस सर। देखिए इसमें पिवट पॉइंट तो ओ है, लेकिन आपकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, पिवट पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये कितना डिस्टेंस बन रहा है, ये स्लांटेड लेंथ 1 फुट है, इसका ये वाला कंपोनेंट आप लेंगे विच इज 1 sin 45। ठीक है, सही सही समझ आ गया। चलें, एनी अदर क्वेश्चन रेलिवेंट टू एनी वन ऑफ दीज फिगर्स आप अभी पूछ सकते हैं, अगर नहीं है क्वेश्चन तो वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड।